A woman reported murder for dowry in Delhi's Ghazipur was found alive in Madhya Pradesh, Gwalior. The woman was believed to have been killed by her husband and in-laws on October 3, following a complaint by her family. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the 22nd CPA India Region Zone 3 conference in Kohima on November 10. Porotso kill of Jakhama village in response to the death of 22-year-old Behuzan Uzau demolished the house and property of the accused family, sparing only the deceased room. US Airlines cancelled more than 1,000 flights on Saturday, the second day of the Federal Aviation Administration order to cut air traffic due to the ongoing government shutdown. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Jakhama and now the news in detail. The Sumi Baptist Church Kohima celebrated its century jubilee on 8 November with a theme Faithful Through the Ages. Reverend Dr. K.O.V.A. Shohi highlighted God's faithfulness, while Y. Kikedo Sema traced the church's 100 years journey since its founding in 1925. The celebration included the unveiling of a century monolith, release of the Jubilee souvenir, and the second edition of the revised Sumi Bible, along with special musical performances. The two-day event featured speeches from SBC and SBAK leaders celebrating a century of faith, service, and community. The Porotso kill of Jakhama village in response to the death of 22-year-old Behuzan Uzau demolished the house and property of the accused family, sparing only the deceased room. Invoking Naga customary law, villagers demanded capital punishment for the accused Samuel, an adopted member of the family. They warned that if authorities fail to act, the community will take action themselves. The incident underscores the deep cultural root and strong community emotions surrounding justice, honor, and family in Naga society. The 9th Captain and Kangaroos MVC Memorial Football Tournament 2025 concluded on 6 November at Indira Gandhi Stadium, Kohima. Organized by the Indian Army and Assam Rifles under Operation Sambhavna, the two-week event celebrated sportsmanship and the legacy of the war hero Captain and Kangaroos. The closing ceremony was attended by MLA Dr. Seliotso Rotso, Army officials, Nagaland Football Associate representative, and the hero's family. Teams from across Nagaland competed, promoting youth talent, teamwork, and unity. The Nagaland Flat Fenders Club marked its 5th foundation day on November 8 at City Square, Chimukidama, showcasing vintage cars and World War II memorabilia. Club President D. John Longkumar highlighted its journey since 2020, while Abu Mehta, Chief Minister's advisor, praised efforts to preserve history and promote Nagaland globally. DRG Imnasenla lauded restorations and urged road safety awareness. The event concluded with a vote of thanks by Dr. Andrew Ahodo, attracting automobile enthusiasts and dignitaries. The first interdepartmental sports meet of Chipubozo sub-division was held on 7 November at Nepo Multipurpose Hall, promoting fitness, teamwork, and talent among government employees. Director of Youth Resources and Sports, Katosito Sekose, lauded organizers for encouraging sports as a profession, while DCB Hanak Buchim urged participants to carry team spirit into their work. ADC Alem Yapang Longchar emphasized fostering cooperation among departments. Even concluded Tug of War, futsal, and badminton with winners such as Rural Development, Medical Department, and Education Department. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the 22nd CPA India Region Zone 3 conference in Kohima on November 10. The two-day event will bring together lawmakers from 8 northeastern states to discuss legislatures as catalysts of change, focusing on climate change, infrastructure, and digital parliamentary initiatives like Nltv.
Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the 22nd CPA India Region Zone 3 conference in Kohima on 10th of November. The two-day event will host MPs, MLAs and presiding officers from 8 northeastern states. The theme is Policy, Progress and People Legislature as Catalyst of Change with focus on development and climate issues. The closing ceremony will feature Rajya Sabha Deputy Chairman Hari Varsh and a tree plantation drive will mark the occasion. CPA Zone 3 promotes regional cooperation, parliamentary best practices and digital governance. Nagaland Social Welfare Advisor Wapang Konyak announced that the state government will soon conduct elderly care camps across 3 districts, starting the Mon district. The initiative aims to provide healthcare, medical assistance and social support to senior citizens. Omai Rebecca Konyak from Tobo unit was crowned Miss Mon 2025 at the pageant held on 7 November at Town Council Hall Mon. Organized by Konyak, Nyupu Sheko Kong with Miss Mon committee, the event celebrated elegance, grace and confidence and featured contestants from 16 unit. Ngamya P. Konyak was first runners-up and won Best Ram Walk, while Ngabli Wangha was second runner-up. Other subtitle winners included Miss Multimedia, Miss Talented, Miss Congeniality and Miss Photogenic. In Jona, a group of 40 to 50 miscreants vandalized the residence of Gitanjali Bori Patir, president of the women's wing of Jona Jagarand Assam Dal, and damaged multiple vehicles. The attack occurred after Lilen Dole, Jona Jagaran Assam Dal president, sought refuge at Patir's house from a previous assault. The mob, allegedly led by Rahul Pegu, Bhaskar Dole and Francis Patir, is believed to have carried out a politically motivated attack. The Jonai police have launched an investigation. ঘটনাটো মই অকস্মাত গমেই নাপালো মানে কি হল মানে বাহিৰৰ পৰা একদম গদং গাদাং কৰি মানে হিলগুটি দলিয়াইছে মিদ্দা লৈ আহিছে একদম দৰজা সজা খুলিব বিচাৰিছে মানে একো গমেই নাপালো মানে ঘৰৰ ভিতৰত আমি কথা পাতি আছো মই ওলাই আহিছো মানে ওলাই আহোতে মানে একদম কিছুমান চেহেৰা মই দেখি পাইছো মানে এইটো ফ্ৰান্সিছ পাতিৰ আছিলে জান দলে আৰু ভাস্কৰ দলে ৰাহুল পেগু ইহঁতৰ নেতৃত্বত মানে 20-40 জন মান হ'ব মানে এনেকুৱা এটা দল একদম জাতি জুং লৈ গোটেই ঘৰ চৰ খিৰিকী দৰজা গেট চকী টকি একদম লেটিন বাল্টিং পৰ্যন্ত খতম কিবা কৰিছে মানে পাকঘৰটো ইটা দলিয়াইছে মানে এনেকুৱা মোক মানে ইহঁতৰ পলিটিকেল কিবা আছে মানে ইহঁতৰ মই মানে জনজাগৰণৰ কিবা বুলি মই ইহঁতে মানে এনেকে আক্ষেপ কৰে মানে মই জনজাগৰণ মহিলা জাগৰণৰ সভানেত্ৰী মানে কি ইহঁতে কেৱল কাৰণে মানে আপোনালোকক কি কৈছে আপোনালোক মানে ইহঁতৰ পাৰ্টিৰ বিপক্ষে যায় বুলি মোক এনেকে কৰে মই ভুৱন পেগুৰ নেতৃত্বত এইটো গণশক্তি আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টিয়ে এনেকে মোক আক্ৰমণ কৰিছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই এইটোকে আহ্বান জনাইছো আমি গণতান্ত্ৰিক দিশত সবৰে মানে ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো আছে সবেই ৰাজনীতি কৰাৰ অধিকাৰ আছে মই কোন পাৰ্টিত যাওক নাযাওক মোৰ এইটো নিজৰ কিবা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হয় মই যোন পাৰ্টিতে নাযাওক লাগে ইহঁতৰ কি কিবা হ'ব লাগে কি বস্তু অনিষ্ট কৰিছে আপুনি কি মানে দুৱাৰ দৰজা খিৰিকী গাড়ী প্ৰথম আহি গাড়ীটোৱে মানে কিবা কৰি লৈছে গেট ভাঙিছে তাৰপিছত গাড়ী লাইন চাইন অফ কৰিছে আৰু ভিতৰটো সোমাব লৈছে আমি ঠেলি কিবা কৰি আছিলো মানে বন্ধ কৰি আছিলো আৰু প্ৰাণী মৰাৰ ভাবুকি দিছে একদম মাৰি খতম কৰিম বুলি কি বুলি কৈছে ইহঁতে যেতিয়া আপোনাক এটেক কৰিব আছে কি বুলি মোৰ নাম লেলিন দলে মোৰ ঘৰ ৰটকে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মোক প্ৰায় 7 মান গাড়ীয়ে মোক আগুচি ধৰিছে আগুচি ধৰি ডাইৰেক্ট মোক
ফ্ৰণ্টৰ গাড়ীটোৰ গ্লাছটো প্ৰথমে ভাঙি লৈছে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে সিহঁতে টোটেলি এই গ্ৰুপটো হ'ব ভুৱন পেগুৰ গুণ্ডাগিৰি মানে কি তাৰ যিকেইটা গুণ্ডা বাহিনীটোৱে হ'ব বুলি মই জাজ কৰি পেলাই মই লগে টাৰ্ণ মাৰি ইয়াত সোমাইছোঁ লাষ্টত গৈ মোৰ লগৰ এজন আছিলে মোৰ লগত তাৰপিছত ইয়াকো হিলেৰে ইয়াত অলপ আঘাত কৰিছে সেইটো মই নামটো ক'ম বাৰু সেইটো নিৰ্মল পেগু সেইটো ৰাজাখানাৰ হয় তাৰপিছত সিহঁতৰটো হৈছে এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ ডাইৰেক্ট মোক মাৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে আহিছে আপুনি চিনি পাইছে নেকি ওলাইছিলোঁ তেতিয়া ওলাই মই ৰিক্সাত গৈ থাকোঁতে গাড়ী এখন মানে আগফালে অলপ আগলৈ গৈ আছে তেতিয়া মানে কিছুমানে না গাড়ীটো এল্টো তেনেকা মানে গাড়ী এটা তাৰপিছতে বাকী মানে আৰু এটা গাড়ী পিছা কৰিছিলে ভালকে দেখা নাই আমি নাজানো গাড়ীটো মানে অলপতে আমাৰ ৰিক্সাটোকে মানে খুন্দিয়াইছিলে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মানে মদ খাই চলাইছিলে নেকি তেখেতক আচলতে পিছা কৰিছিলে এতিয়া মোৰ মানে আইডিয়া লেলিন দলে একচুৱেলি মানে সিহঁতে পিছা কৰিছিলে তাৰপিছতে সি গাড়ীখন ঘূৰি মানে ইয়াত Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma inaugurated the new Meghalaya Public Service Commission office in Tura, a significant move aimed at benefiting aspirants, especially from Garo Hills. The facility will ease the long travel burden for candidates who previously had to journey 10 to 15 hours to Shillong for exam. Now with the new office in Tura, they can focus more on preparations and less on travel. A parked Tata Altroz was completely gutted after a speeding Hyundai car collided with it late last night on Ding, Moraibari Gorakaptani Road near Ding Chariali. The fire was quickly brought under control by police and fire services. Both vehicles were seized and no injuries were reported. স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে ৰাতিপুৱা সেইখিনি আমি সদায় দেখি থাকোঁ সদায় স্কুল বিকাটা এইখিনিত প্ৰয়োজন অফিচ কাছাৰীৰ কাৰণেও মানুহ আহে স্কুল বিকাটা ইয়াত খুবেই প্ৰয়োজন আপোনাৰ ইয়াত স্কুল বিকাটা লাগে খুব স্পীডত আহে মৰিয়াবাৰীৰ পৰা হওক ডিমাৰ পৰা হওক টাৰ্ণিংটোৰ পৰা সেইপিনৰ পৰা যেতিয়া লয় এইপিনৰ মানুহখিনি নেদেখে এইপিনৰ পৰা যেতিয়া লয় সেইপিনৰ মানুহখিনি নেদেখে যি কাৰণে আজি এইখিনি হ'ল আজি যিহেতু দুখন গাড়ীৰ মাজতে সংঘাত হৈ পেলাই Union Minister Bhupendra Yadav congratulated the Botanical Survey of India team for completing the Kundao TSO trek in Arunachal Pradesh, honoring the 1962 Battle of Wolong. The 8-member team documented over 230 plant species despite challenging conditions. On November 5, they unfurled the national flag at Kundao TSO, symbolizing India's strength and patriotism. Manipur will host the National Tribal Film Festival from 12 to 15 November in Imphal as part of the Jajantia Gaurav Varsha celebration. The event will showcase 23 tribal films from 9 states, including feature films, documentaries, and short animation. The festival will include master classes, panel discussions, and sessions with filmmakers, and the closing ceremony on 15 November will honor tribal leaders. The final training for polling parties in the Dampa Assembly by-election set for November 11 was completed today. 5 political parties are contesting, and the constituency has 41 polling stations with Silsuri and Zopui marked as critical and sensitive respectively. The total vote count of 20,790 with all security and logistics in place for a smooth election. In Karupetia, a man was arrested by the village defense party for carrying bhang intended for sale. The suspect from Nij Karupetia was intercepted by VDP secretary
Afzalur Rahman and local youth while transporting the drugs hidden under his bicycle seat from Bongai Mari village. The accused, who had been allegedly trafficking bhang in nearby villages, was handed over to Karupetia police. Local residents have lauded the VDP's quick action in curbing the illegal trade. The 4th Kangri Glacier expedition launched on Saturday in Arunachal Pradesh Mago-Chu Basin, aiming to study the response of Himalayan glacier to change climate. The week-long mission led by Dr. Paramanand Sharma involved scientists from CSHS, NCROP and other institutions. The primary focus is to examine glacier mass balance, movement and the risk of glacier lake outburst flood, which pose a threat to downstream communities. The finding will provide insight into the region's climate and water security. Battlefield, a documentary by Borum Thokchim, has been selected for the Indian Panorama sections at the 56th International Film Festival of India. The film explores the impact of World War II on Manipur through survivors' account and historical insight. Produced by Manjoy Lorem Bam, Dr. Radhesham Oinant and Vishwamitra Universals, it will premiere on November 22nd at Inox in Panjim. Prime Minister Modi shared Union Minister Jyotiraditya Scindia's article on November 9, calling the Northeast India forward phase and gateway to Southeast Asia. Scindia highlighted the region's transformation through infrastructure projects and credited Prime Minister Modi's vision of its growth. During his visit to Meghalaya and Assam, Scindia inaugurated key projects including Rs 233 crore tourism initiative and research-focused development. The Indian Women's World Cup win and Richa Ghosh's standout performance have sparked a cricketing revolution in Siliguri. Local girls inspired by Richa now dream of donning the Indian jersey. Richa began her journey at Begajatin Athletic Club, where her father, a former cricketer, coached her. Now young girls, some as young as 11, are flocking to the center, eager to follow in her footsteps. The rise in female participation reflects growing parental support as more girls are encouraged to take up cricket, inspired by Richa's success. वो डिस्ट्रिक्ट टीम में खेलते थे, नॉट आउट रहते थे, हाईएस्ट रन गेटर होते थे, कीपिंग करते थे, ओके, फ्रॉम द एज ऑफ 8, 9, 10, ठीक है. तो जब इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ 10 साल का उम्र था, ठीक है. सो शी प्लेड इन जलपाईगुड़ी, कुचबिहार में खेले. शी वाज नेवर आउट. I mean, she always was unbeaten. She opened the innings and played till the end. Once they see ये कि मेरा साथ खेलते थे वो एक लेवल में पहुंच गया, तो वो भी सपना देखते हैं. तो those dreams actually they make them do what everyone wants them to do. ऋचा घोष ने पहले इधर खेल रही थी, अभी वो इंडिया टीम में, मतलब इंडिया टीम से रिप्रेजेंट करके अभी इंडिया कुछ दिन पहले ही जीत के आई है. इंडिया को रिप्रेजेंट करके मतलब जीती है वर्ल्ड कप. फिर मुझे लाइक उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिला है. मैं भी चाहती हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की. वुमेन्स क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीत रही, जो कभी झूलन गोस्वामी, मिथाली राज ने नहीं कर पाया, वो हमारा शिलीगुड़ी का ऋचा दी ने कर दिखाया है. तो 24 बॉल में 34 मतलब का नॉक जो था वो बहुत मतलब हमको मोटिवेशन देता है. तो मतलब बहुत खुश है हम. लोगों का भी सोच बदल चुका है और बच्चे भी उत्साहित हैं खेलने के लिए कि हम इंडिया टीम में खेलें. और ख़ास करके अभी तो वर्ल्ड कप जीती है बेटियां लोग, तो उससे और जैसे कि लोग प्रभावित है. और हम लोग गार्जियन भी अब पहले बात नहीं रह गई है. हम लोग को भी सोच बदल गया है कि बेटियां जो हैं सो कुछ भी कर सकती है. कई गार्जियन का मन में हो रहा है कि मेरा लड़की भी खेल सकता है, ऐसे ही सब. The counterintelligence Kashmir launched search in Kulgam, Kunzir and Sophian on Sunday, investigating the misuse of SIM cards by terror operative. Officials confirmed that several SIM cards were seized during the operation.
CIK, a specialized unit of Jammu and Kashmir Police, is focused on countering anti-national activities. Arrests in connections with the search are pending. In a historic move, Tadasha Mishra has been appointed as Jharkhand's first female Director General of Police. She met with Chief Minister Hemant Soren on Friday, who shared a photo of the meeting on social media. Assuming charge at the police headquarters in Ranchi, Mishra expressed her commitment to ensuring peace and security in the state, urging full cooperation from all. Her appointment is being seen as a scientific step in women's empowerment within the state police force. फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा 15 नवंबर का जो है हम लोग का स्थापना दिवस कैसे शांतिपूर्ण और अच्छा से ढंग से हो जाए। और पुलिस ऑलवेज वर्क्स एज ए टीम, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ऑफिसर कुछ करता है। आई हैव ए ग्रेट टीम हियर, जस्ट नाउ यू सॉ हाउ ऑल ऑफ देम आर देयर एंड आई एम श्योर कि हम लोग जो भी झारखंड सरकार का जो भी विजन है और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जो हम लोग को करना है वो सब हम लोग करेंगे। बेसिक पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग पर हम लोग जोर देंगे, बाकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, नक्सल है, वो सब हो रहा है। वी हैव कम फॉर रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल पुलिसिंग। सो ऐसा नहीं कि पुलिस एक दूरता जो है उसको हम लोग कम करने की कोशिश। Bengaluru's Para Agrahara Center Jail is under scrutiny after videos showed high-risk inmates including ISIS recruiter Jihad Ahmed Shakil Mana and serial killer Umesh Reddy using mobile phones and watching TV. Authorities have launched an internal inquiry into the footage, authenticity and accountability. This follows the previous security breach in October where a notorious rowdy shooter celebrated his birthday inside the jail. Of opposition Rahul Gandhi on Sunday accused the Election Commission of using the specific intensive provisions of electoral rolls to cover up and institutionalize vote theft. Speaking in Panchmari, Madhya Pradesh during a Congress training camp, Gandhi alleged that large-scale vote manipulations occurred in Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra and Chhattisgarh, claiming 25 lakh votes were stolen in Haryana alone. Gandhi added that the Congress had more evidence which will be released gradually. देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर, आने वाले समय में भी खुलासा करेंगे, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिस तरह से अब तक अन्य राज्यों को लेकर आपने किया। हाँ, हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर, को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 नहीं, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। An assistant returning officer in Bihar's Samastipur district was suspended after VVPAT slips from a mock poll were found scattered on the roadside. The Election Commission acted quickly after a video of the incident went viral. The district magistrate is investigating the matter while the integrity of the poll remains intact. An FIR has been filed against the ARO for negligence. आज दिन में एक घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत
डिस्पैच सेंटर के समीप कुछ पर्चियों के वीवीपैट पर्चियों की सूचना मिली थी। घटना की जैसी जानकारी प्राप्त हुई स्वयं संबंधित पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और जो भी ये पर्चियाँ थी उनको हम लोगों ने वहाँ जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में इसको कन्फिस्केट किया, सीजर किया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है कि जिन लोगों ने भी लापरवाही की है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की भी अनुशंसा। आज दिन में Delhi's air quality continues to worsen with pollution levels crossing 400 in several areas on Sunday, making the capital one of the most polluted cities. AQI readings at Anand Vihar, ITO and Nehru Nagar exceeded 420, marking the severe category. The city's 24-hour average AQI on Saturday was 361, ranking it as the second most polluted city in the country. Authorities predict the air quality will stay very poor for the coming days. A woman reported murder for dowry in Delhi's Ghazipur was found alive in Madhya Pradesh, Gwalior. The woman, identified as Ruchi, was believed to have been killed by her husband and in-laws on October 3, following a complaint by her family. During the investigation, police traced her to Gwalior, where she was living with her former classmate and lover Gajendra Yadav. Officials said Ruchi's marriage had taken place against her will, and her in-laws claim she often argued with her husband, and she had said that she was forced into the marriage. पार भुजुरा वहाँ की वादिनी है राजवती देवी पत्नी स्वर्गीय रामदास, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा दिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्विलांस टीम की मदद दी गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना 7 के अंतर्गत ही की गई। समस्त तथ्यों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की जिसका नाम रुचि है, इसकी शादी जून 2023 में हुई थी। इसके बाद ये शादी के कुछ दिन भी रही, फिर उसके बाद वो चली गई। पहले बनारस गई, बनारस से भीमापाल गई, भीमापाल से फिर चली गई। एक लड़का है गजेंद्र से इसकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान, जिससे कि इसका प्रेम संबंध था। लड़की से बातचीत करने पर पता चला कि लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, जिससे कि लड़की चली गई, अपने मन से गई थी। लड़की पर किसी ऐसी प्रताड़ना की कोई ऐसी बात लड़की ने नहीं बताई है। और अन्य जो साक्ष्य हैं कि लड़की के विषय में कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं, सभी साक्ष्यों का हम अवलोकन कर रहे हैं। वादिनी से भी बातचीत किया जा रहा है। सभी तथ्यों के अवलोकन कर हम विधिक कार्रवाई। शादी हुई सर, वही हमको तो दिन तारीख मालूम नहीं है। हाँ, 2023 को शादी हुई। बहुत हम शौक से शादी किए, बहुत शौक से शादी किया। अपना लड़का का शादी करके लाया। लाने के बाद में लड़की जो आई, उसका बिहाने पहले वो लड़का हमारा जब घर में गया तो उसको संग में बहुत मैंने झगड़ा झंटी किया। बोला तुमको हम पति नहीं मानते हैं। पहले ही रात को पति नहीं मानते हैं। हमारा पिताजी जबरदस्ती ब्याह किया। सर, ये हत्या का जो मामला है झूठी थी, जिसमें कि उसका भोला जो भाई था वो झूठी दर्ज किया था। लाजवंती देवी जिसका उसकी माँ थी भोला का, अशोक उसका भाई, बड़ा भाई है। भोला का जो ससुर है सचई, यही लोग मिल के हम लोग को ऊपर झूठी केस बनाया था, जिसके जो हमारे सीओ साहब हैं। Washington Sundar was awarded Impact Player of the Series after India's 2-1 T20 international win in Australia. Sundar played key roles including top scoring with 49 off 23 balls in the third match and taking 3 wickets in the fourth to seal India's 48-run win.
The Impact Player of the Series award recognized decisive contributions in bilateral series and was introduced by the BCCI. A powerful tornado struck Panama in southern Brazil on Friday night, killing 6 people, including a 14-year-old girl, and injuring over 400. Winds exceeding 250 km/h flooded homes, uprooted trees, and damaged infrastructure, leaving many families homeless. Rescue teams continue searching for one missing person amid widespread destruction. The state government has declared an emergency to speed up relief and recovery efforts. U.S. Airlines cancelled more than 1,000 flights on Saturday, the second day of the Federal Aviation Administration order to cut air traffic due to the ongoing government shutdown. Major airports including Charlotte, Atlanta, Chicago, Denver, and Newark faced disruptions with staffing shortage in water centers and control towers worsening delays. The FAA said reductions currently affecting 4% of flights at 40 airports could rise to 10% by Friday if the shutdown continues. Air traffic controllers have been working without pay for nearly a month, leading to sick calls and overtime fatigue. While most passengers have been able to rebook, officials warn of more cancellations ahead if the shutdown persists. We will now take a short break. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. Cypriot President Ahmed al-Shara arrived in the United States on Saturday for a historic official visit, the first by a Syrian leader since 1946 following his removal from the U.S. terrorism blacklist. Sarah, whose force ousted Bashar al-Assad last year, is set to meet President Donald Trump at the White House on Monday. The visit aims to strengthen Syria-U.S. ties, with discussions expected on joining the U.S.-led coalition against ISIS, establishing a military base near Damascus, and securing international aid for Syria's post-war recovery. Space talks between Afghanistan and Pakistan ended without a breakthrough as both sides blamed each other over border clashes and ceasefire violation. Afghanistan rejected Pakistan's demand, while Pakistan accused Kabul of sterilizing TTP militants. Despite the ceasefire, fighting has continued, leaving civilians and soldiers dead. Pakistan has partially reopened the Torkham border but keeps most crossings closed, disrupting trade and deporting undocumented Afghans. Future negotiations remain uncertain. Haryana police and Indian agencies have arrested 2 wanted gangsters abroad. Bangladesh guard of the Nandu gang was caught in Georgia. Extradition is underway. He is wanted in a Gurugram BSP leader murder and extortion cases. Banu Rana, linked to the Lawrence Bishnoi gang, was arrested in the US and will be deported. His network spans Haryana, Punjab and Delhi, with several associations already in custody.
World champion Lee Gukesh lost to Frederick Sven in the third round, exciting his chase World Cup. Erigashi and Pragnananda both reached the last 32, with Erigashi drawing Pragnananda winning. Grandmasters Hari Krishnan and Pranav also advanced, while Diptayan Ghosh was eliminated by Gabriel. That is all for the Nltv English Primetime. For more news and update, keep watching Nltv.